How to bulk up for skinny guys. Hi, I am ईशान. मैं एक फिटनेस प्रोफेशनल हूँ और आज हम बात करने वाले हैं स्किनियर बॉडी टाइप्स के बारे में. अगर आपका बॉडी टाइप थोड़ा लाइट या थिन है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए. We'll cover these things during the video. Number 1. How much workout should you do to build muscles? 2. How to increase your calorie intake? 3. Importance of recovery. Watch this video till the end to know that one thing you should absolutely not do when you want to bulk up. Weight gain एक ऐसा टॉपिक है जो मोस्टली ओवरलुक हो जाता है क्योंकि ज़्यादातर लोग वेट लूज करना चाहते हैं. इन रियलिटी अंडरवेट या स्किनी लोगों के लिए एक ऑप्टिमम वेट तक पहुंचना काफी बड़ा चैलेंज होता है. The good news for all skinny guys is that with careful planning, hard work and most importantly consistency, putting on weight is well within your grasp. First thing you can do is not fall into the trap of second guessing. जैसे कि should I train my chest with my back or shoulders? How should I grip my weights? Overhand or underhand? Should I eat 30 or 35 grams of protein per meal? ये सारी चीजें आपको stress out करती हैं और muscle growth को रोक सकती हैं. Building muscle doesn't need to be complicated. It's hard, brutal and takes a hell of a long time, but it's still simple. Here are a few important tips for thinner body types. Number 1, focus on big compound exercises. For having a bigger physique, you should focus on compound exercises जैसे कि chin-ups, squats, presses, dips, rows and variations of deadlifts. ये आपको bigger body type बनाने में काफी help करेंगे. 80% of your training with these exercises will boost up the muscle volume and you can fill the remaining 20% with curls, lateral raise variations and abdominal exercises. 2. Train only 4 to 5 days a week. Most skinny guys simply train too hard for faster results. But ऐसा करने से आपकी बॉडी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है. अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा स्ट्रेन देना is not recommended. I recommend that 4 to 5 workouts a week are good enough for you. The rest of the days will serve as a perfect sweet spot for muscle recovery and subsequent growth, especially if you've been training effectively for at least 1 to 2 years. Some setups जो आप follow कर सकते हैं वो हैं upper body workout, lower body workout, push, pull, legs, arms, upper, lower strength focused, upper, lower hypertrophy focused. So remember, आपकी body gym के बाहर grow करती है, अंदर नहीं. Number 3, stick to one program for a minimum of 3 months. There is a lot of information overload about building your body online, जो आपको confuse कर सकता है. ध्यान रखें, आपकी body consistency crave करती है for results, confusion नहीं. Number 4, focus on progressive overload. Most thin guys stay thin because they never focus on actually getting stronger. अगर आप thin हैं, तो you need to allow your muscles to adapt with increased overload. आपको focus करना है either on adding weight or doing more reps with the same weight. Number 5, use perfect form. Progressive overload करने के वक्त आपको इन 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा. Optimal form, execution, consistency. ऑप्टिमल फॉर्म ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर आप अपना स्क्वाट 60 kg से 100 kg बढ़ा रहे हैं बट योर डेप्थ हैज़ गॉन फ्रॉम बिलो पैरेलल टू अ 20 डिग्री नी बेंड तो आपकी ज़ीरो प्रोग्रेस होगी. आपका लास्ट रैप एंड फर्स्ट रैप सेम दिखना चाहिए फ्रॉम अ टेक्निक एंड रेंज ऑफ मोशन पर्सपेक्टिव विद द ओनली डिफरेंस बीइंग द स्पीड. डोंट वरी, लास्ट रैप फर्स्ट रैप से सब्सटैंशियली स्लो ही होगा. नंबर 6, eat enough calories. आपको एक प्रॉपर डाइट फॉलो करना चाहिए with at least 5 to 6 meals a day. मसल रिकवरी के लिए आपको कार्ब्स, प्रोटीन, फाइबर एंड एसेंशियल फैट से भरपूर मील खाने होंगे every 2 to 3 hours. Protein is an ingredient that is vital for a post-workout meal because ये आपकी मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है and is important for recovery after a workout. सबसे बड़ा challenge for many thinner guys is that they are not able to eat enough food on a consistent basis. इसके कई कारण हो सकते हैं जैसे कि a naturally low appetite, eating less than they think they are, moving more than they think they are. कभी आपने ये नोटिस किया है कि your thinner friends can't seem to sit still for too long और वो हमेशा कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं. These individuals tend to expend a lot of energy through NEAT, non-exercise activity thermogenesis, which can increase even more when overfed.
नंबर 7, मैक्सिमाइज रिकवरी। रिकवरी एबिलिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए प्रॉपर रेस्ट बहुत जरूरी है। आपकी बॉडी रेस्टिंग के टाइम ग्रो करती है। Your time in the gym is only a signal for growth. Once stimulated, your body needs food, sleep, and plenty of rest to be able to grow. Prioritize high quality sleep every night. Eat in a consistent calorie surplus with the right foods. Reduce stress. All these things will add up to allow you to recover faster between workouts, get stronger, and ultimately build more strength. One thing you must not do while bulking up. मसल बिल्डिंग के दौरान काफी लोग कैलोरी काउंट बढ़ाने के चक्कर में जंक फूड खाने लगते हैं। इंस्टेड आपको फ्रीक्वेंट मील्स खाने चाहिए that are heavy on nutritional calories, starchy foods and protein. Basically, आपको फोकस करना है on foods that have a high caloric content because calories matter when you are trying to pack on muscle mass. If you found this video useful, do let us know in the comments and please do subscribe to the channel.